So it's 6 a.m. guys. This is the last video for CF. Rohan has already recorded one for PPP. So this I'll go just run over it quickly. But since the topic is important and since we have two sums on it, we'll just cover it quickly. So I'll start by reading the question. A proposal involves a PPP between a private company and a state government, whereby the private company will give 20% of its revenue to the government. The project involves an investment of 35,000 in fixed assets. 10,000 of this will be provided by the government and 9,000 in net working capital. The project will be financed with a debt to value of firm of 1/3. Its cost of debt is 15%, cost of equity 24%, tax rate 40%. It is expected to generate annual gross revenue of rupees 1,25,000 for 5 years. Variable cost is 60% of revenue. Fixed cost is rupees 10,000 and depreciation is 2,500. So they're saying the free cash flow comes to 10,000. So that we'll see what that's about. Now the first question is how much will be the debt? Now, if you remember, there's a sentence given that debt is 1/3 of the total value of the firm. So if you get the full value of the firm, we can get debt, which is 1/3 of that. Now, how to calculate the full value of the firm? So that there can be many ways to do this, but in this case, based on the given data, we will use free cash flow to find how much is the value of the firm. Okay, basis how much cash flow the firm is making, we estimate the value of the firm. So again, I'll just read out quickly the given data. So follow this practice of noting down the given data. 20% revenue is to be given to the government. 35,000 investment required, out of which private is 25, government is 10, working capital is 9,000, debt to value of firm is 1/3, cost of debt 15, cost of equity 24%, tax rate 40%, gross revenue 1,25,000, variable cost is 60%, fixed cost 10,000, depreciation 2,005. Now the first thing that we need is a discounting rate. Since we are dealing with cash flows, we've learned that we need to discount cash flows to find their present value. For this, we need a discounting rate. Now, since we have capital, which is equity as well as debt, we find the weighted average cost of capital, whereby 1/3 of the debt percentage is used and 2/3 of the equity percentage is used. Since in this case, debt to equity ratio is 1/3 and 2/3. So now also note here that in debt, there is one thing known as a tax shield. So even though my cost of debt is 15%, what will happen is I will pay tax. I will pay lesser tax because if suppose my revenue was 100, I would have ended up paying a tax of 15. But because I have taken debt, suppose I have to pay an interest of 10 rupees. So 100 minus 10, now I only have to pay tax on 90. तो जो 10 रुपए पे मेरे को tax बच रहा है, that's called a tax shield. So that I'm getting, मतलब I'm paying lesser tax because I'm paying debt. ठीक है, सो हम डेट के 15% से ही 40% सब्ट्रैक्ट कर देंगे because essentially that is the cost of my debt, because I am saving money as a result of taking debt. I'm saving money on taxes. So my effective rate cost of capital of debt comes to only 9%. तो 9% का 1/3 3% ले लिया एंड इक्विटी का 24% था, उसका 2/3 ले लिया. So the total weighted average cost of capital comes to 19%. Okay. Now, so that's my discounting rate. Now let's talk about the calculation for the free cash flow. For now, ignore column D. Ignore these figures. Let's focus on column C. So they're saying the revenue is 1,25,000. उसमें variable cost is 60%. ठीक है, इसका 60% ये लेस हो जाएगा. गवर्नमेंट को अपन 20% दे रहे हैं, ये भी लेस हो जाएगा. So my contributions is the classic vertical income statement which we've prepared. So revenue minus variable cost gives contribution. In this case, we are also subtracting the government revenue and coming to a contribution of 25,000. इसमें से fixed cost अपने को दिया हुआ है 10,000, वो subtract किया तो EBITDA, that's earning before interest, taxes, depreciation, amortization is 15,000.
इसमें से डेप्री भी अपने को दिया है, वो भी हटाया, तो ईबिट कम्स टू 12,500. इसमें टैक्स एट द रेट 40% निकाल दिया ना. आइडियली आई शुड हैव रिमूव्ड इंटरेस्ट आल्सो हियर, बट राइट नाउ मुझे डेट ही पता नहीं है, right? So I am only right now I'm not removing the interest. So I removed the tax of 40%, came to earnings after tax of 7,500. Now the idea is depreciation मेरा cash expenditure नहीं है. Here I'm calculating free cash flow. So that's why I add back my depreciation and my free cash flow comes to 10,000. Now your question could be कि why did I subtract depreciation here? So I subtracted depreciation here because tax calculate करते time depreciation subtract होता है. So tax is calculated after subtracting depreciation. तो मेरी tax amount correct आने के लिए मैंने depreciation subtract किया, फिर tax calculate किया, फिर मैंने depreciation add back कर दिया because actually मेरा depreciation में cash नहीं गया है. Okay, so my free cash flow came to this figure of 10,000 which was given in the question. ठीक है. So we finished WACC. Now we finished the free cash flow. Now this I have found out the discounting factors. 1 divided by 1 point whatever the WACC is, in this case 19, raised to the year. So 1, 2, 3, 4, 5, and this is the summation of all 5 years. Okay. Now I find the present value of all my inflows. So how do I find that? तो फ्री कैश फ्लो जो है 10,000 का, दैट इज इन इनकम विच आई एम गेटिंग फॉर ईच ऑफ द 5 years. तो मैंने सीधा 10,000 को इस समेशन ऑफ द डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया. सो आई फाउंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस फ्री कैश फ्लो. नाउ वर्किंग कैपिटल जो हम इन्वेस्ट करते हैं, दिस इज ऑलरेडी कवर्ड, दैट ऑल्सो गेट्स रिकवर्ड एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट. सो इन द 5th year मेरे को 9,000 जो वर्किंग कैपिटल डाला था वो भी वापस मिलेगा. अब ये सिर्फ 5th year में मिल रहा है, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ ओनली द 5th year. ये दो फिगर्स ऐड करके मुझे मिला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ माय इनफ्लोज एज ऑन डेट. सो आई एम अर्निंग थ्रू माय फ्री कैश फ्लोज एंड आई एम अर्निंग माय वर्किंग कैपिटल बैक. बोथ दीज फिगर्स आई डिस्काउंटेड टू द प्रेजेंट, और ये जो मेरे को फिगर आई ऐड करके दैट आई डीम एज द वैल्यू ऑफ द फर्म. आई से द फर्म कैन अर्न सो मच, तो आज की तारीख में उसकी वैल्यू है 34,348. That's how I got the value of the firm. Now debt is easy, so our first question gets answered. ये total value है, तो उसका 1/3 is my debt. ठीक है, this is done. Now the question is how much equity is the private company putting in? So let's see. Now I need money for the fixed asset 35,000. I need money net working capital 9,000 today. Now the government is giving me 10,000. Okay, and मैंने लोन लिया हुआ है of 11,449 as per this calculation. So बचा हुआ अमाउंट, राइट, तो मुझे 35,000 प्लस 9,000 चाहिए, माइनस 10,000 गवर्नमेंट ने दे दिया, माइनस 11,449 मुझे लोन से मिल गया. तो जो बैलेंस है वो है प्राइवेट इक्विटी जो कंपनी खुद डाल रहा है. सो 22,551 इज द प्राइवेट इक्विटी दैट द कंपनी इज पुटिंग इन. ठीक है. Now the third question is what is the return on equity for the company? ठीक है. So for this let's see. अभी what you need to understand is कि ये जो मेरे को 10,000 आया है ना, यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट नहीं सब्ट्रैक्ट किया था. इफ यू रिमेम्बर ईबिट के बाद टैक्स इंटरेस्ट निकल के ईबीटी आना चाहिए था, बट मैंने इंटरेस्ट निकाला नहीं बिकॉज मेरे पास इंटरेस्ट था नहीं. सो दिस 10,000 includes a portion जो मुझे मेरे डेटर्स को पे करना है जो मैंने नहीं किया है. That's why this 10,000 is called unlevered cash flow. It is before my leverage was deducted. ठीक है. अब जब मेरे को देखना है कि रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, राइट, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स है ना, उन लोग को ये पूरा 10,000 नहीं मिलने वाला है बिकॉज उसमें से डेटर्स का इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट होने वाला है. ठीक है. तो उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वही सिर्फ शेयर होल्डर्स के पास जाएगा. ओनली दैट कैन काउंट एज रिटर्न ऑन इक्विटी. सो माय फ्री कैश फ्लो इज 10,000. उसमें से मैंने इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट किया 1717. हाउ डिड आई गेट दिस? Debt amount of 11,449 into the percentage cost of debt which was 15%. Okay.
अब क्या है कि इस चक्कर में भी मेरा इंटरेस्ट मेरा टैक्स बचेगा ऑन दिस इंटरेस्ट अमाउंट, बिकॉज खर्चा हो रहा है तो इनकम कम हो रहा है, इनकम कम हो रहा है तो टैक्स कम हो रहा है। तो ये जितना इंटरेस्ट अमाउंट है उस पे जो 40% टैक्स मेरा बच रहा है, दैट विल बी सॉर्ट ऑफ एन इनकम फॉर मी। ओके, और यू कैन लुक एट इट एज एन अवॉइडेंस ऑफ एन एक्सपेंस। ठीक है, तो मेरा ईयर 1 to 4 levered cash flow, which is only for my equity shareholders, which is after subtracting interest, comes to 8970। और इंटरेस्ट अमाउंट हमने पूरा नहीं सब्ट्रैक्ट किया, हमने इंटरेस्ट अमाउंट में टैक्स की बचत ऐड कर दी। ठीक है, तो इंटरेस्ट थोड़ा हमको एसेंशियली कम खर्चा आ रहा है बिकॉज टैक्स बच रहा है अपना। ठीक है, कितना टैक्स बच रहा है? 40% ऑफ दैट इंटरेस्ट अमाउंट। So for my equity shareholders, year 1 to 4 में I earn 8970 as opposed to my unlevered 10,000 cash flow which I earn for my debtors as well as my shareholders. ठीक है? Now in year 5 there is an additional cash flows, two additional cash flows happen. एक तो ये 10,000 मैं कमाऊंगी, वो तो अपने को पता है। दूसरा है मेरा वर्किंग कैपिटल वापस आ रहा है 9,000 का। इंटरेस्ट कैलकुलेशन सेम रहता है, टैक्स भी बच रहा है इंटरेस्ट पे, वो भी सेम रहता है। नाउ इन ईयर 5 मेरे को मेरा पूरा डेट का प्रिंसिपल भी रीपे करना होगा, जो मेरी पूरी लोन अमाउंट थी ऑफ 11,449। ठीक है, तो ईयर 5 का कैश फ्लो थोड़ा अलग होगा। उसमें 10,000 का इनकम आएगा, 9,000 का इनकम आएगा, आउटफ्लो ऑफ 1,717 आएगा, इनफ्लो ऑफ 687 होगा विच इज माई सेविंग्स ऑन टैक्स, एंड प्रिंसिपल लोन रीपेमेंट ऑफ 11,449। तो ये सब करके ईयर 5 में माई लीवर्ड कैश फ्लो कम्स टू 6,520। ठीक है, अब टू फाइंड द रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ दिस प्राइवेट कंपनी, मेरा प्राइवेट कंपनी ने ईयर 0 में डाला कैश आउटफ्लो ऑफ 22,551 and in every year this is how much it earned, which is basis this calculation that we have done. year 1 में 1 to 4 में उसने 8970 कमाया, 5th year में उसने 6,520 डाला। तो यहाँ पे अपन सीधा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से करेंगे। IRR फॉर्मूला एज यू ऑल रिमेंबर, इट्स अ सिंपल एक्सेल फॉर्मूला। IRR, यहाँ पे आउटफ्लो नेगेटिव ले लिया और ये इनफ्लोज का रेंज ले लिया, so the IRR is 26.71%, means return on equity for the private company on its outflow of -2251 is 26.71%. Now moving to what is the ROE of the government. अभी गवर्नमेंट ने सीधा सिर्फ स्टार्टिंग में कैश आउटफ्लो 10,000 का डाला। अभी हर साल उसको 25,000 मिल रहा था, 25,000 पे वो 40% टैक्स देगा, तो 40% सब्ट्रैक्ट करके 15,000 हो गया। तो एवरी ईयर गवर्नमेंट इज अर्निंग 15,000। तो आउटफ्लो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में आया 10,000, बाकी हर साल में आया 15,000। तो गवर्नमेंट का तो IRR आ जाता है 148.41%, सेम फॉर्मूला। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो थोड़ा ट्रिकी है। दे आर आस्किंग व्हाट इज द एक्चुअल ब्रेक इवन रेवेन्यू। ठीक है, तो हाउ इज दिस कैलकुलेटेड? Now we'll see the cash outflow. समझो अभी अपने को रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, तो समझो वी डोंट नो व्हाट द कैश इनफ्लो इज। तो अपन ने कैश इनफ्लो के लिए लिख लिया x, अपने को नहीं पता कैश इनफ्लो कितना है। आउटफ्लो तो अपने को पता है टोटल कंपनी का कितना है, 35,000 उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है एंड 9,000 उसका वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है। तो टोटल आउटफ्लो ईयर 0 में उसका होने वाला है 44,000, ये मेरे को पता है। अभी वो कुछ तो इनफ्लो कमाएगा, वो कितना इनफ्लो कमाएगा मेरे को नहीं पता, पर वो जो भी इनफ्लो है वो मैं मल्टीप्लाई करती हूँ विथ माय सम ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर्स, राइट। तो सपोज वो x होता तो मैं मल्टीप्लाई करती हूँ उसको, ये 3.057, तो ये अमाउंट आती है 3.0576x। एंड ईयर 5 में मेरे को वर्किंग कैपिटल वापस मिल जाता था, तो ये मैं माइनस कर दूंगी मेरे 44,000 से। तो एसेंशियली मेरे को इतना रेवेन्यू कमाना है कि मेरे को 40,229 कवर हो जाए। 40,229 कहाँ से आया? 44,000 का आउटफ्लो माइनस 3,771 का इनफ्लो एट द एंड ऑफ 5 years। तो 40,229 मेरे को कवर करना है विथ दीज कैश इनफ्लोज।
तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया विद दिस सम ऑफ 3.0571 टू फाइंड एक्स, ठीक है, बैलेंस ये LHS RHS करके। तो मेरा x इक्वल टू आया 13,157. So when my free cash flow is 13,157, मेरा आउटफ्लो और इनफ्लो नील हो जाता है, ठीक है। 44,000 मेरा आउटफ्लो था, वो पूरा रिकवर हो जाता है। अब अगर मेरा फ्री कैश फ्लो 13,000 है तो मेरा रेवेन्यू कितना होगा? तो फॉर दिस वी गो बैक टू दिस कैलकुलेशन। यहाँ पे अपन ने ये रेवेन्यू से अपन पहुंचे थे 10,000 के फ्री कैश फ्लो पे। अब अपने पास फ्री कैश फ्लो है, अब अपने को रेवेन्यू निकालना है, तो अपन अब नीचे से ऊपर जाएंगे। सो द फ्री कैश फ्लो इज 13,000 एज पर जो नीचे का कैलकुलेशन था। डेप्रिसिएशन अपने को दिया हुआ है 2,500, तो ये मैंने ऐड किया ऊपर आने के लिए, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स मिल गया। अब टैक्स है 40%, so this amount is 40%, which means 10,657 is my 60%. So I find out कि 100% कितना होगा, ताकि उसमें से 40% सब्ट्रैक्ट करके मेरे को अर्निंग्स आफ्टर टैक्स मिले। तो ये 100% आ गया अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब डेप्री अमाउंट फिक्स्ड है, वो ऐड बैक कर दी, तो ईबिटडा हो गया 20,000। अब उसमें फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 है, तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 30,000। अब मेरे को पता है कि मेरा वेरिएबल कॉस्ट है 60%, गवर्नमेंट रेवेन्यू है 20%, रेवेन्यू है 100%, and that means contribution is also 20% because this totals up to 100. तो यहाँ पे again unitary method use किया कि if 20% is 30, तो 60% will be 90 and 100% is 151. So this is the revenue at which my free cash flow becomes 13,157. When my free cash flow becomes 13,157, उसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी और फिर मेरा इनफ्लोस will become equal to my outflows and my project will have a net present value of 0. So that's the sum, guys. I know I went a little fast. Doubts रहेगा तो पूछ लेना, and hopefully Rohan's video should clarify most of it. Thank you. Peace out. Good night.